देख रहा है पापा वहाँ खटिया पर सो रहे हैं। चल ये चारों रॉकेट उस खटिया में लगाकर पापा को ऊपर उड़ाते हैं। नहीं नहीं, कहीं पापा को कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा, चल अब रॉकेट लगाते हैं। बाबू तू चुपके से अपना दोनों रॉकेट पापा के खटिया में उस तरफ लगा और मैं इस तरफ लगाता हूँ। ठीक है, मैं जल्दी से रॉकेट लगा देता हूँ। अरे कौन खटिया हिला रहा है? अरे यहाँ खटिया के आसपास तो कोई भी नहीं दिख रहा। फिर से सो जाता हूँ। बाल बाल बच गए बाबू, नहीं तो अगर हमें पापा ने देख लिया होता तो वो हमें बांध कर पीट दे। अब इन रॉकेट्स को जलाएंगे कैसे चिंटू? हमारे पास तो आग है ही नहीं। तुम यहीं रुको, मैं घर से आग लेकर आता हूँ। अगर पापा ज्यादा ऊपर से गिरेंगे तो क्या होगा पापा का? मैं और चिंटू जरूर गलत कर रहे हैं पापा के साथ। ये देख बाबू, मैं आग लेकर आ गया। तू दूर हट जा, मैं चारों रॉकेट्स में आग लगा देता हूँ। मुझे लगता है चिंटू हमें पापा को ऊपर नहीं उड़ाना चाहिए। अरे चुप कर, कुछ नहीं होगा पापा को। जल्दी भाग बाबू, रॉकेट्स में आग लग गई है। अब देखना बाबू, वो चारों रॉकेट उड़ेगा। उड़ने लगा, पापा का खटिया उड़ने लगा। अरे बाबू कूदना बंद कर। देख पापा तो बहुत ऊपर तक चले गए। मुझे लगा था कि बस थोड़ी सी ही ऊपर जाएगा रॉकेट। तो अब क्या होगा पापा का? पापा पापा जल्दी उठो और कूद जाओ खटिया पर से नीचे। पापा पापा जल्दी उठो ना। चल बाबू, मम्मी को बता देते हैं कि पापा अब नहीं बचने वाले। मैंने तुझसे कहा था कि मत उड़ा पापा को, लेकिन तुम माना नहीं। चल जल्दी मम्मी के पास। अरे चिंटू के मम्मी, सोते हुए रसमलाई खिला रही हो क्या? ठीक है, खा लेता हूँ। अरे चिंटू की मम्मी क्या खिला दिया? बहुत घटिया टेस्ट है इसका। उल्टी हो गया रे दादा। अरे नहीं, मैं कबूतर का पोटी खा गया। हुई हुई हुई, चल भाग जा यहाँ से कबूतर। ससुरा मेरे मुंह पर हक दिया। अब चलता हूँ पानी से कूला करने। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ आ गया? बचाओ! अरे बाप रे, किसी ने मेरे खटिया में दिवाली वाला रॉकेट लगाकर आसमान में उड़ा दिया है। अब क्या होगा मेरा? मम्मी मम्मी, गजब हो गया। क्या गजब हो गया चिंटू और बाबू? हमने पापा के खटिया में रॉकेट्स लगाकर पापा को आसमान में उड़ा दिया है। क्या? अरे लेकिन दीपावली तो अभी बहुत दिन बाद है और तुम दोनों अभी से पटाखे फोड़ने लगे। जल्दी कुछ करो मम्मी, नहीं तो पापा टे बोल जाएंगे आसमान से गिरकर। लगता है अब मैं ना बच पाऊंगा। इतने ऊपर से गिरूंगा तो मेरे तो पुर्जे पुर्जे ढीले हो जाएंगे रे दादा। बचाओ बचाओ! यहाँ आओ, यहाँ पापा गिर रहे हैं। अरे वाह, नीचे चिंटू और उसकी मम्मी चादर ताने हुए हैं। लगता है अब मैं बच जाऊंगा। मम्मी उधर चलो, पापा उधर गिर रहे हैं। नहीं नहीं, इधर ही रहो। देखो वो इधर ही आ रहे हैं। अरे जल्दी जल्दी इधर आओ, मैं यहाँ गिर रहा हूँ। नहीं नहीं, इधर ही रहो मम्मी। अरे गिर गया रे ससुरा। मैंने चिंटू से कहा था उधर चलने के लिए, लेकिन ये गया नहीं। कमीनो, जिसने भी मुझे आसमान में उड़ाया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बताओ किसने मेरे खटिया में दिवाली वाला रॉकेट लगाया था? मैंने नहीं लगाया था, और मैंने भी नहीं लगाया था। तो कौन है वो हरामजादा जो ऐसा किया? मैं बताती हूँ पापा। बाबू और चिंटू ने लगाया था दिवाली वाला रॉकेट। क्या? नहीं नहीं पापा, चिंकिया झूठ बोल रही है। जब तुम दोनों के पीछे लठ बजेगा तब पता चलेगा कि किसने लगाया रॉकेट। पापा पापा छोड़ दो हमें, अब हम ऐसा दोबारा कभी नहीं करेंगे। चिंटू के पापा छोड़ दो ना चिंटू और बाबू को। चुप करो तुम, मैं इन दोनों को भी उड़ाऊंगा आसमान में। चिंकिया
चिंकिया, चल इन दोनों के बड़े रॉकेट में आग लगा। ठीक है पापा, अभी लगाती हूँ आग। मम्मी रोको ना चिंकिया को। Alright, let's talk about something that has a lot of BMW fans buzzing right now. The rumored return of one of the most futuristic cars BMW has ever made, this time with a serious performance twist. The 2026 BMW i8M. And yes, that name alone already tells you this isn't just a comeback, it's a full-on evolution. Now, if you remember the original i8, you probably remember how it looked like it rolled straight out of a sci-fi movie. Even years later, it still turns heads. So the idea of BMW bringing it back for 2026 and adding the full M treatment is honestly kind of wild, in the best way possible. From what's being hinted at and rumored, the 2026 i8M is expected to lean even harder into that futuristic supercar vibe. Think lower, wider, and more aggressive, but still clean and elegant in that very BMW way. Sharper LED lighting front and rear, slimmer headlights, a more sculpted hood, and those signature flowing lines that made the original i8 so unique. You can expect more carbon fiber elements, deeper air channels, and M-specific details like larger wheels, performance brakes, and a stance that just screams speed even when it's parked. And unlike some supercars that look amazing but feel intimidating, the i8M is expected to keep that approachable BMW design philosophy. It looks exotic, but not over the top. Something you could actually imagine driving every day, or at least dreaming about driving every day. Now let's talk about what really matters with the i8M, the powertrain. The original i8 was a plug-in hybrid, and for its time, it was revolutionary. Fast forward to 2026, and BMW has had years to refine hybrid and electric performance, especially with their M division stepping into electrification. The expectation here is a high-performance hybrid setup combining a turbocharged gasoline engine with powerful electric motors, likely one on each axle for intelligent all-wheel drive. The focus won't just be straight-line speed, but instant torque, sharp throttle response, and smooth power delivery. This thing is expected to feel brutally quick, with electric boost filling in gaps and making acceleration feel effortless. Don't be surprised if the i8M ends up pushing supercar-level numbers while still offering short electric-only driving for city use. Quiet when you want it, absolutely ferocious when you don't. That's kind of the magic BMW is aiming for here. Performance without sacrificing efficiency or daily usability. Now, off-road features might sound like a strange thing to bring up with a car like this, but hear me out. No one's saying the i8M is going rock crawling. What's more likely is a focus on all-weather and all-condition confidence. With advanced xDrive all-wheel drive, adaptive suspension, and intelligent drive modes, the i8M should be perfectly comfortable dealing with rain, rough roads, and less than perfect pavement. Think adjustable ride height or adaptive dampers that can soften up when you're cruising and firm up instantly when you're pushing the car hard. Combine that with precise traction control and torque vectoring, and you get a car that feels planted and confident whether you're carving a mountain road or driving through a rough city street. It's not an SUV, but it's definitely not fragile either. Step inside, and this is where the 2026 update should really shine. The original i8 interior was futuristic, but tech has moved fast, and BMW knows it. Expect a much cleaner, more digital cabin with a wide, curved display, the latest version of BMW's infotainment system, and a fully digital instrument cluster designed specifically for M-performance driving. Materials should be a mix of luxury and sustainability. Premium leather, Alcantara, carbon fiber, and recycled high-quality materials blended together. Sport seats with aggressive bolstering, an M steering wheel, and ambient lighting that gives the cabin that modern, high-end feel without being distracting. And despite being a performance-focused car, BMW is likely to keep things practical where it counts. Comfortable seating, usable storage for daily items,
and enough tech to make long drives feel effortless. This isn't just a weekend toy. It's meant to be lived with. When it comes to pricing, let's be realistic. The 2026 BMW i8M will not be cheap. With advanced hybrid tech, carbon fiber construction, and full M performance, this car is expected to sit firmly in the high-end performance category. Think well into six-figure territory, positioned against cars like hybrid supercars and high-performance electric coupes. That said, compared to some exotic brands, BMW will likely try to make the i8M feel like a performance bargain, relatively speaking. You're paying for cutting-edge technology, a legendary badge, and a car that blends performance, efficiency, and daily usability in a way very few others can. Now, how does this compare to past i8 models? Honestly, it's a completely different mindset. The original i8 was about the future, showing what was possible. The 2026 i8M is about proving that the future can also be insanely fast and genuinely thrilling to drive. Where the old i8 felt more like a tech showcase, the i8M is expected to feel like a true driver's car. Sharper handling, more power, better feedback, and a much stronger emotional connection behind the wheel. It's BMW saying, yes, electrification is here, and yes, it can still be fun. And that's really what makes the idea of the 2026 BMW i8M so exciting. It's not trying to copy anyone else. It's not going full electric just for the sake of it, and it's not clinging to the past either. It's finding that sweet spot in between. If BMW gets this right, the i8M could become one of the most iconic performance cars of the decade. A car that looks like tomorrow, drives like a true M machine, and proves that performance and innovation don't have to cancel each other out. So if you're a fan of BMW, hybrids, or just cars that dare to be different, this is definitely one to keep an eye on. And honestly, even if it stays a bit of a dream car for most of us, it's the kind of dream that keeps car enthusiasm alive. Let me know what you think. Would you take an i8M over a traditional supercar? Or is this the kind of future you've been waiting for?